Hello guys, Dr. Rawat here, and finally your exam FMGE January 2023 is over, and I know and I understand that most of the students watching this video after this exam are not happy. They are not happy because the exam overall exam did not go the way they thought it would go. So, talking about paper first, after paper first, I spoke with a few of my students, and they were really happy and excited. कि yes, sir, paper easy था. It was more of modification of PYQs, or it was like it was. Most of the students were able to handle the question in the part first because they were direct questions, and I did not expect कि paper first easy होगा, क्योंकि पिछले तीन चार अटेम्प्ट से ऐसा होता है कि पेपर फर्स्ट टफ होता है और पेपर पार्ट टू जो है वो स्लाइटली इजी रखते हैं, बट दिस टाइम इट वाज twisted. And the thing that paper first they kept it easier for the most of the students, so it went well for most of the students. And after the paper first, I knew that there would be some twist, because if paper first is easy, then paper 2 is going to be slightly difficult. And according to the review of the students, it was not slightly tough, but it was quite tough, I would say, because I spoke with average student and brilliant students, and all of them admitted that it was really quite tough paper. They like this time what happened is that in part 2, it was a trend that in part 2 you will have clinical questions with long history, so that with the long histories when the long history is given the question, you tend to get more of hints. But this time they gave really brief short story in the 2 to 3 lines, and then they asked what is the diagnosis, what not to do, what is the best step. And these kind of the questions, they really become difficult for students when you don't give the proper history and the long history to solve the questions. So in my take, paper first was slightly easier on side, and paper 2 was quite tough. But I'm expecting if someone if any student has scored 85, around 85, 80 plus or 85, I would say better. If you have scored 85 in paper first, then definitely you are going to pass in part 2. ठीक है. और एक और चीज़, आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि इतनी मेहनत की है, इतने नोट्स पढ़े हैं, इतने टेस्ट दिए हैं, और फिर भी जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा है. एंड इट्स रियली डिफिकल्ट. FMG has become, like clearing FMG has become very difficult task to do, and all of you are suffering from this. I also suffered this, and but I would say you to have some break from the studies, and please, if you want to check the recalls will be coming soon on the different coaching institute channels, so you can check your recalls if you want to check. If you do not want to check, it's up to you. But more or less, like, it's all about, I would say it's more of luck for most of the students. If your luck was good, if your luck will be good, you will be passing the exam. And I really hope and I really pray from bottom of my heart that everyone pass this exam. And I really understand it's really सो टायरिंग एग्जाम. इट्स ये लाइक, क्या मैं बोलूँ कि ये कीचड़ की तरह है, ये दलदल की तरह है. अगर इसमें कोई बच्चा फंस गया तो वो फिर फंस जाता है, और वहाँ से डिफ़िकल्ट है निकलना. इतना आसान नहीं है जितना हम कहते हैं, जितना हम बोलते हैं उतना आसान है नहीं. और जो बच्चे पास होने को है वो ऐसे पास हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे मतलब मेहनत करते हैं ज़रूर, और जो बच्चे नहीं हो पा रहे वो भी मेहनत कर रहे हैं, बट ये ऐसा दलदल है, इसमें एक बार फंस जाता है तो यहाँ से निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है. एंड दिस इज़ वॉट has happened from last 3-4 attempts especially. And तो मेरा तो मैसेज यही है कि अभी आप प्लीज़ ब्रेक लीजिए स्टडीज़ से. ठीक है, रिकॉल्स देखने आपकी अपनी मर्जी है, बट स्टडीज़ से ब्रेक लीजिए. आपने जो करना था आपने कर लिया है. ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं है. यू कैन जस्ट प्रे दैट यू विल पास. ठीक है, और मेरा भरोसा है कि अगर आपने सिंसियरली मेहनत की है और इतने टफ पेपर में भी अगर आपने फाइटिंग स्पिरिट से पेपर दिया है, तो यू विल क्रॉस द मार्क ऑफ 150. दैट्स इट. इट डजेंट मैटर द पेपर वॉज क्वाइट टफ और ईजी. ठीक है, आप पास हो जाएंगे अगर आपने फाइटिंग स्पिरिट के साथ पेपर दिया होगा. ठीक है. एंड फॉर द जूनियर्स द बिग मैसेज is for them that now you could see the trailer of next
from these papers in the MCA from last 2 3 sessions especially. And you should be ready for the clinical questions, and you should be having good concepts. And please try to build your concepts, try to clear your basics, ठीक है? और मतलब काम नहीं चलेगा यार, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलने वाला है, आपको बेसिक्स बिल्ड करने ही पड़ेंगे। और प्लीज़ इसमें तैयारी चाहिए होती है। अब इफ स्पेशली मतलब मैं अगर एमसीए की बात करूँ, एफएमजी की बात करूँ और नेक्स्ट की बात करूँ, तो मुझे लगता है कम से कम 2 साल की तैयारी चाहिए होती है। सो प्लीज़ इफ़ आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं अभी भी, तो जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट करिए, बिल्डअप करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए करिए, ठीक है? और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई रियली विश एंड आई रियली प्रे फ्रॉम बॉटम माई हार्ट for these students and the aspirants of January 2023 to pass this exam. May God bless you all. See you soon.